Namaskar, hello and welcome to Sunset TV. I am Namrata Singh and you are watching Question Hour. The show focuses on important questions raised by members in both houses of parliament concerning matters of national interest. In the Rajya Sabha, members from various parties posed questions related to 10 ministries and sought responses from the respective ministers. Similarly, in the Lok Sabha's Question Hour, members from diverse parties raised questions pertaining to 18 ministries and sought responses from the respective ministers. Now, let's take a look at some of the questions whose replies were tabled in both the houses. Rajya Sabha member Dr. Dharmsthal Virendra Hegde asked the Minister of Education details of measures taken to improve the quality of education in primary schools and objectives of launching national initiative for proficiency in reading with understanding and numeracy, Nipun Bharat. The ministry in its reply informed the House that Samagra Shiksha, a centrally sponsored scheme aligned with the National Education Policy 2020, has been designed with focus on improving the quality of education through various measures such as introduction of new pedagogical and curricular structure, early childhood care and education, foundational literacy and numeracy, transforming assessment for student development, competency-based learning, etc. There is a dedicated component of quality and innovation under Samagra Shiksha, wherein funds are provided to states or union territories for quality-related interventions to enhance learning levels of students in schools. Such interventions include in-service training of teachers and school heads, composite school grant to every school for providing a conducive learning environment, grants for library, sports and physical activities, support for STEM education under Rashtriya Avishkar Abhiyan, ICT and digital initiatives, learning enhancement programs, conducting achievement surveys at state and national level, school leadership development program, remedial support for academically weaker students, holistic progress card which allows a 360-degree evaluation of the learner's progress, skill exhibition competition and internship for skill education, etc. The House was further informed that in order to improve teacher effectiveness, support is provided under Samagra Shiksha for strengthening and upgradation of state councils of educational research and training and the district institutes of education and training as nodal agencies for contextual curriculum development and teacher training. Besides the above, following initiatives have been taken to improve the quality of education in India. The National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy, Nipun Bharat, ensures that every child in the country attains foundational literacy and numeracy by the end of grade 2 by 2026-27. E-content for the same has been released on the Diksha platform and TLMs have been prepared to achieve the goals of Nipun Bharat. Under Samagra Shiksha, all 36 states or union territories are implementing Nipun Bharat mission. Nishtha Integrated Teacher Training Program has been introduced to capacity building and training at different stages of school education for teachers, head teachers or principals, master trainers and other stakeholders in educational management. A 3-month play-based school preparation module and guidelines for grade 1 Vidya Pravesh to promote school preparedness in all children entering grade 1 from diverse backgrounds and to provide play-based, age and developmentally appropriate learning experiences in a joyful and stimulating environment leading to holistic development. Lok Sabha members Dhairishil Sambhaji Rao Mane and Chavan Ravindra Vasant Rao asked the Minister of Department of Space whether government proposes to launch Chandrayaan 4 mission and details along with the aims and objectives thereof. ये एक बड़ा ही सुखद संयोग है। आज के प्रश्नकाल का पहला प्रश्न अंतरिक्ष के साथ संबंधित है और आज ही प्रातः 3:27 पर सुनीता विलियम जी का धरती पर लौटना हुआ है 300 दिन के बाद। और आपने देखा होगा कि कल ही मीडिया ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लिखा हुआ एक पत्र जारी किया था जिसमें उन्होंने सुनीता विलियम जी को संबोधित करते हुए उनकी
सुरक्षित वापसी की कामना भी की थी और उन्हें भारत आने का निमंत्रण भी दिया था। चंद्रयान 4 जिसको लेकर के सदस्य ने बात रखी है कि उसका क्या महत्व रहेगा, उसका क्या उद्देश्य और लक्ष्य रहेगा। मूलतः तो वो सैंपल ले जाने के लिए है, लेकिन वो सारी प्रक्रियाएं अंजाम देगा, वो सारी एक्सरसाइजेस जो आने वाली हमारी मिशंस के लिए अनिवार्य रहेंगी। और जिस प्रकार सुनीता विलियम को लाने के लिए डॉकिंग और अनडॉकिंग के प्रोसेसेस का इस्तेमाल किया गया, वो हमारे लिए भी आने वाले समय में अनिवार्य रहेगा, क्योंकि भारत की भी योजना है कि हमारा एक अपना अंतरिक्ष स्टेशन हो जिसका हम नाम भारत अंतरिक्ष स्टेशन रखें। और यदि सब कुछ योजना अनुसार चलता रहा तो सन 2040 को एक भारतीय मूल का व्यक्ति चांद पर धरती पर उतारने की भी योजना है। अब चंद्रयान एक पहला ऐसा हमारा मिशन रहेगा जो 2 लॉन्च व्हीकल्स से छोड़ा जाएगा। उसके 5 कंपोनेंट रहेंगे, 3 एक तरफ 2 एक तरफ। और डॉकिंग अनडॉकिंग जिसकी थोड़ा बहुत अनुभव स्पेडेक्स से भी हुआ है, उसको बार बार कर करके और अधिक अनुभव और क्षमता हासिल करने का प्रयास रहेगा। ये दोनों रॉकेट ऊपर जाकर के अर्थ के ऑर्बिट में जुड़ जाएंगे, डॉकिंग होगा। फिर वहाँ से जब वो चंद्रमा के ऑर्बिट में जाएंगे तो अलग होकर के डिसेंडर और असेंडर मॉड्यूल नीचे उतरेंगे। डिसेंडर मॉड्यूल सैंपल इकट्ठे करके वापस लौटने के बजाय वहीं रह जाएगा। असेंडर मॉड्यूल वापस जाएगा, फिर से डॉकिंग होगी बाकी के रॉकेट के साथ। और फिर वो जो ट्रांसपोर्ट मॉड्यूल जब नीचे आएगा अलॉन्ग विद दी री एंट्री मॉड्यूल, तो धरती के ऑर्बिट में आकर के वो फिर से अलग हो जाएगा। और आते समय मूलतः केवल 10% उसका वजन रहेगा, क्योंकि सारे मॉड्यूल धीरे धीरे अलग होते रहेंगे। तो ये रिपीटेड डॉकिंग अनडॉकिंग की प्रैक्टिस भी रहेगी, जिससे हमें अपनी क्षमताओं का भी आत्मविश्वास आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। और आने वाली हमारी जितने भी मिशंस हैं उसके लिए भी हमें अनुभव रहेगा। लोकसभा मेंबर शिव मंगल सिंह तोमर asked the Minister of New and Renewable Energy specific strategies being implemented to accelerate progress and achieve the target of covering 1 crore households under Pradhan Mantri Surya Ghar Muft Bijli Yojana. माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से ये जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो निकाली है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के जो कई घोषणा है सबका साथ सबका विकास, यही सबका विकास करने के लिए मेरे ख्याल से ये योजना का प्रारंभ ऑलरेडी हुआ है। आज तक 10 लाख घरों पर ये मुफ्त बिजली योजना के कनेक्शन दिए हुए हैं। और एक नया पोर्टल बना के जो कुछ अड़चनियाँ थी, कमियाँ थी, वो सभी एक ही पोर्टल से सुलभ करके आज ये स्कीम बहुत अच्छी तरह से आज चल रही है। और आज 10 लाख के से भी ज़्यादा ये कनेक्शन आज दिए हुए हैं। और मैं सभी से अपील करता हूँ कि ये जो स्कीम्स के जरिए निश्चित तौर से हम एम्प्लॉयमेंट भी तैयार कर पाएंगे। जो कार्बन एमिशन जो हमारी एक पंचामृत के ओर से जो कुछ घोषणा की है पीएम ने, ये कार्बन एमिशन भी हम कम कर पाएंगे। और ये सभी के लिए और हर घर को ये योजना लागू करके हम उसका बिल जीरो कर पाएंगे। और उल्टा जो कुछ पावर तैयार होगी, एक्स्ट्रा पावर तैयार होगी, उससे उसको फायदा भी मिलेगा, उसके अकाउंट में पैसा भी जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो रूफटॉप बनवाने के लिए 1 किलोवाट के लिए हम 30,000 की सब्सिडी देते हैं। 2 किलोवाट के लिए फिर 30,000 की, यानी टोटल 60,000 हो गई। यदि वो और तीसरा किलोवाट डालने का प्रयास यदि करेंगे तो उसको 18,000 रुपया और सब्सिडी मिले। ऑल टुगेदर 78,000 सब्सिडी उसको मिल सकती है। और ये जो जितना वो यूज़ करेगा और जो बाकी जो कुछ पावर बचेगी वो ग्रिड में वो दे सकता है, वो उसके बदले में उसको पैसा मिल सकता है। इसी तरह से ये कॉमन मैन जो जब अपने सूर्यघर योजना के अंतर्गत ये स्कीम लेगा, उसको इसी तरह से फायदा मिलेगा।
Lok Sabha member Gurjeet Singh Aujla asked the Minister of Electronics and Information Technology concrete steps taken to formulate and implement a comprehensive national cybersecurity strategy to effectively combat cyber threats and safeguard digital infrastructure. And if so, the details and the key focus areas thereof and the manner in which it aims to address rising cyber frauds, data security concerns in case there is no such strategy. The ministry, in its reply, informed the House that its policies are aimed at ensuring an open, safe, and trusted and accountable internet for its users. Government has taken several legal, technical, and administrative policy measures for addressing cybersecurity challenges in the country. The ministry further informed the House that nationwide integrated and coordinated systems have been institutionalized to deal with cybersecurity matters in the country, which inter alia includes National Cybersecurity Coordinator under National Security Council Secretariat to ensure coordination amongst different agencies. Under the provisions of Section 70B of the Information Technology Act 2000, the Indian Computer Emergency Response Team is designated as National Agency for Responding to Cybersecurity Incidents. National Cyber Coordination Center implemented by the CERT in services as the control room to scan the cyberspace in the country and detect cybersecurity threats. NCCC facilitates coordination among different agencies by sharing with them the metadata from cyberspace for taking actions to mitigate cybersecurity threats. Cyber Swachh Kendra is a citizen-centric service provided by CERT, in which extends the vision of Swachh Bharat to the cyberspace. Cyber Swachhta Kendra is the botnet cleaning and malware analysis center and helps to detect malicious programs and provides free tools to remove the same, and also provides cybersecurity tips and best practices for citizens and organizations. Indian Cybercrime Coordination Center has been created to deal with cybercrimes in a coordinated and effective manner. Under the provision of Section 70A of the IT Act 2000, National Critical Information Infrastructure Protection Center has been established for protection of critical information infrastructure in the country. To ensure secure and resilient cyberspace, the primary focus is on the three pillars of securing national cyberspace, strengthening existing structures comprising of people, processes, and capabilities, and synergize resources for their optimal utilization to protect the digital environment in the country. Lok Sabha members Sanjay Haribhau Jadhav and Arvind Ganpat Sawant asked the Minister of Railways whether the government has introduced Vande Bharat, Bharat Gaurav and Tejas trains across the country, and details thereof including the salient features, aims and objectives thereof. वंदे भारत का जो चेयर कार का वर्जन है, वो चेयर कार का वर्जन बेसिकली 400 या 350 किलोमीटर से लेके 600 किलोमीटर तक की यात्रा के हिसाब से। तो ये विषय पहले भी कई बार चर्चा में आया है। प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा हमको यही मार्गदर्शन दिया है कि वंदे भारत ट्रेन जब इंट्रोड्यूस करें तो देश के सारे राज्यों में इसका बेनिफिट मिले, और वो प्रयास सफल भी हुआ। आज नॉर्थ ईस्ट से लेके हिमाचल से लेके तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, सभी स्टेट्स में जहाँ पर भी ब्रॉड गेज इलेक्ट्रीफाइड है वहाँ पर वंदे भारत की सर्विसेज स्टार्ट की गई है। और जो लॉन्गर डिस्टेंसेस हैं, जैसा माननीय सांसद का जो क्षेत्र आता है और जो रूट आपने बताया, उस रूट में इतने लंबे डिस्टेंस तक बैठ के जाने का प्रवास का प्रोविज़न नहीं होता है। इसीलिए उसमें आने वाले समय में जिस तरह की व्यवस्था हो पाएगी, ज़रूर मैं माननीय सांसद से डिटेल में चर्चा करके उसमें करूंगा। और अगर इंडिविजुअल ट्रेन्स का विषय अगर है तो वो ज़रूर मेरे साथ अलग से चर्चा करें। बहुत ही मैं संतुष्टि के साथ, गौरव के साथ कहना चाहूँगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़े सभी क्षेत्रों को एक बहुत अच्छे भारत गौरव सर्किट यात्रा से जोड़ा जाएगा। Rajya Sabha members Dr. Parmar Jaswant Singh Salam Singh, Brijlal,
Madan Rathore, Baburam Nishad, among others, asked the Minister of Education whether government is considering to integrate the teacher app with the existing national teacher training programs under the National Education Policy 2020 and whether there is a plan to incorporate regional language support in the teacher app to improve accessibility. The ministry in its reply informed the House that Diksha portal and Diksha app, which is presently used by all teachers across the country and across all schools including private schools. The House was further informed that the National Council of Education, Research and Training has launched a national mission to improve learning outcomes at the elementary level through an integrated teacher training program called Nishtha, National Initiative for School Heads and Teachers Holistic Advancement under Samagra Shiksha. Nishtha is a capacity building program for teachers, head teachers, teacher educators, and education administrators in the school education sector. Nishtha empowers the teachers and school heads with the digital skills that can be further used to enhance digital literacy of students. Nishtha Elementary, Secondary, FLN and ECCE covers various courses in Indian languages. Under this, ICT in teaching learning including artificial intelligence is one of the courses covered. It is to be mentioned that all the Nishtha integrated teacher training programs have dedicated course modules on use and integration of technology in school education, teaching, learning and assessment. Teacher training through Nishtha Online has been onboarded on the digital infrastructure for knowledge sharing platform since October 2020. The ministry informed that Diksha portal and Diksha app is a storehouse of nearly 7,438 e-books, 3.69 lakh e-content and over 21,000 e-courses for students, teachers, teacher educators and parents. The portal has contents including primers in 133 languages including 7 foreign languages. More than 63 lakh teachers have completed Nishtha training on Diksha portal. Rajya Sabha member R. Girirajan asked the Minister of Fisheries, Animal Husbandry and Dairy whether government has any plan to increase the per capita income of fishermen in the country, particularly in Tamil Nadu, and the share of funds provided by the union government under various schemes for the development of fishermen in the country. सही बात है कि तमिलनाडु में मैरीन फिशिंग और इनलैंड फिशिंग के स्कोप है, लेकिन जो फिशिंग में नंबर 1 5 टॉप फिशिंग स्टेट्स हैं उसमें आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश है। लेकिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत जितने इन्वेस्टमेंट और जितनी स्वीकृति दी गई है अन्य राज्यों में, उसकी तुलना में तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा राशि स्वीकृत किया गया है। 2008 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है और ये जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में जो स्वीकृति है वह राज्य सरकार की अनुशंसा पर केंद्र और राज्य के भागीदारी के आधार पर स्वीकृत की जाती है। सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में तमिलनाडु की योजनाएं स्वीकृत की गई। इसके पहले प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत पहले आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में मछली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो कार्यक्रम चलाए गए, पहला ब्लू रिवॉल्यूशन के तहत 300 करोड़ रुपए की स्वीकृति तमिलनाडु को दी गई थी। उसके अलावा कई वेसल्स और जो चर्चा इन्होंने की हमने स्वीकृत किया है तमिलनाडु की। और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में अगर राज्य सरकार की और भी कोई योजना प्राप्त होगी वहाँ के मछली उत्पादन को बढ़ाने के लिए, और जो PMMSY के गाइडलाइंस हैं उस गाइडलाइंस के तहत अगर वो योजनाएं होंगी तो निश्चित तौर पर केंद्र सरकार उसको बढ़ाने का काम कर रही है। Rajya Sabha member Narayan Das Gupta asked the Minister of Skill Development and Entrepreneurship number of candidates
enrolled under Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana in each state and union territory during the last 3 years. I would first quote the PLFS survey 22-23 that says that 62% of the vocationally trained population is currently working, implying that vocational training has helped people secure employment, livelihood for themselves. This obviously indicates a strong correlation between skilling, vocational training, and employability. Sir, as far as third-party evaluation, in 2020, sir, October, Niti Aayog had done a study of PMKVY 2.0. I'll just share the findings quickly. About 94% of the employers surveyed reported that they would hire more candidates trained under the scheme. 52% of the candidates that were placed in full-time, part-time employment received higher salary or felt that they will get higher salary compared to their peers who have no certification. Sir, the second such survey was conducted by Indian Institute of Public Administration in 2020, and I have the findings here, sir. The maximum percentage of beneficiaries, which was 70.5%, received placement in their desired skills sector. And the astounding impact of the skilling was that 118.2% change in the monthly wages of the beneficiary. Sir, a third impact evaluation study of Sambodhi and IPE Global in 2020, the findings here are that 76% candidates acknowledged that their chances of getting another employment to be good or very good. And as far as recognition of prior learning, 75% of PMKVY certified employed candidates agreed or strongly agreed that the training has helped them be more prepared for their current employment. Apart from this, sir, National Council of Applied Economic Research has been engaged by the ministry for conducting impact assessment of PMKVY 4, which is the current phase. Our ministry has onboarded KPMG for conducting a data-driven analytics for the National Apprenticeship Promotion Scheme. And lastly, sir, Quest Alliance is also working to develop a framework for grading ITIs. Well, that is all I have for you in this edition of Question Hour. Stay tuned and thank you for watching Sunset TV.